हेलो एवरीवन, नमस्कार। अगर आप मुझे और देवजीत को देख सकते हैं एंड इफ़ वी हैव कनेक्टेड देन प्लीज़ कमेंट कीजिए यहाँ पे। आई थिंक आई एम हियरिंग माई सेल्फ हियर थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम तो दिखा रहा है। इट हैज़ बीन इज लाइव ऑन इंस्टाग्राम। पर हम ओके। लोग का ये अलाइनमेंट का कुछ इशू है, तो इट्स नॉट। हाँ, आई विल जस्ट सॉरी अमित जी, हम 2 मिनट लेट हो गए। अगर आप तो मुझे और दीपजीत को देख सकते हैं एंड इफ वी हैव सर मेरा आई कैन हियर माई सेल्फ। अच्छा, वो वो मेरा उसको वो वाला म्यूट कर देना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाय एवरीवन एंड या ओके। आई थिंक आज मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर है आई गेस। सो जस्ट लेट मी नो बिकॉज कल मुझे काफ़ी फीडबैक मिला इस बात पे कि माई वॉइस वॉज ब्रेकिंग अ लॉट। सो जस्ट लेट मी नो अगर इफ एटलीस्ट फ्यू ऑफ यू कैन टेल मी सर मेरा हाउ माई वॉइस इज साउंडिंग टुडे। यस, वेरी क्लियर, थैंक यू एंडी। हेलो एवरीवन एंड आई गेस आई मीन कुछ प्रॉब्लम रहता तो अब तक कोई ना कोई तो बोल ही देता था। सो हाई टू एवरीवन जिन्होंने भी अब तक हाई बोला, हाई एंड या वी हैव देवजीत हियर हेलो, एंड हाय हाय गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देवजीत का तो इंट्रो मैंने कल ऑलरेडी कर दिया है। सो सो इन केस यू नो कोई यस कल कोई लॉगिन नहीं किया था और टुडे इज अटेंडिंग दिस स्ट्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम, देन I would request you to follow Devjit on his Instagram channel. I mean, he's a great. I mean, he calls himself a cricket storyteller, but he's beyond that. He's much beyond that, and has very interesting trivias and tales about the history of cricket to share with his followers. Okay, so do follow him. Okay, and let's just get going with today's streaming session. Okay, and let's see if, and yeah, I got a lot of feedback कि मैं कल स्ट्रीम के वक्त क्वेश्चंस नहीं ले रहा था। वन वॉज द टेक्निकल थिंग जो मैंने होपफुली सॉर्ट आउट कर दिया, एंड सेकेंडली वॉज दैट दी आई वॉज नॉट टेकिंग इनफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट। सो आई विल मेक श्योर दैट व्हेन आई एम देवजीत आर टॉकिंग, यू नो, टाइम एंड अगेन आई कीप लुकिंग एट द चैट कि कोई किसी ने कोई सवाल किया है जिसको हम ये कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। ओके, सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट। देवजीत, हाउ वॉज योर ओवरऑल रिएक्शन टू हाउ थिंग्स अनफोल्डेड टुडे? ऐसे तो कल काफी सारे टीम्स आई थिंक डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू देयर प्लान फर्स्ट डे। एग्जैक्टली। हाँ। तो तो आज वो थोड़ा सा मेकअप करने का कोशिश काफी टीमों का था। कुछ कुछ सक्सेस हुए, कुछ कुछ सक्सेस नहीं हुए। स्पेशली मेरे को वो पार्ट काफी अच्छा लगा जब मुंबई इंडियंस दे हैड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड देन दे वेंट एग्जैक्टली, ऑल फॉर जोफ्रा आर्चर एंड दैट which पीरियड। is हाँ। exactly the first person we'll be talking today. So तो I think when it was very clear yesterday, I mean, there's no doubt that I was initially very confused कि MI की strategy क्या है। Confused से ज़्यादा I was more anxious कि मतलब चल क्या रहा है। You know, हाँ they were very quiet. Halfway through the I mean the bidding process, they had barely selected 3 or 4 players, but I think they knew all through कि उन्हें करना क्या है। राइट। दे वांटेड टू गो फॉर जोफ्रा आर्चर, बट और इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुआ सोशल मीडिया पे। मैंने देखा कि पीपल वर सेइंग कि ही इज़ नॉट एनीवेज नॉट अवेलेबल फॉर दिस सीजन। सो मतलब उसको उस पर पैसे डाल के मतलब क्या है। बट आई थिंक ये हमने एम आई ने फ्यूचर का देख के ये किया, बिकॉज दिस इज लाइक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड इवन इफ ही प्लेस फॉर जस्ट 2 seasons, गेटिंग हिम फॉर 8 crores, आई थिंक इट्स स्टिल अ वेरी वेरी गुड डील। एंड यू नो, if he can play for Mumbai, and like imagine like he and Bumrah opening together, it's like a nightmare for any batsman in the world, right? Any world class batsman in the world. हाँ एग्जैक्टली। आई थिंक ये फ्यूचर का सोच के इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना। 8 करोड़ फॉर अ प्लेयर ऑफ जोफ्रा आर्चर्स कैलिबर, जो कुछ दिनों पहले भी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन T20 थे, मतलब इफ नॉट द बेस्ट। Yeah, तो डेफिनेटली अ वेरी गुड बेट। और 2 साल बाद अगर नहीं लेते अभी, बाद में शायद और ज़्यादा महंगा पड़ जाता। तो इट्स अ गुड बाई मतलब। yeah, yeah. And I think यहाँ पे I mean ये भी है कि आई थिंक अभी मुंबई का स्क्वाड इज मोर लुक्स मच मोर बैलेंस ना व्हाट ही वाज लुकिंग yesterday, एग्जैक्टली। right? है ना? And I think they are also got Basil Thampi, right? हाँ, दे हैव गॉट हाँ, बेसिल थम्पी एंड उन्होंने स्पिनर्स में तो मुर्गन अश्विन कल ही हाँ, लिया। मुर्गन अश्विन ले आए। हाँ, टाइमल मिल्स है और
वो भी एक आई थिंक वेरी डिसेंट फॉरेन बॉलिंग ऑप्शन। एंड उसके बाद आपका मयंक मार्कंडे को आई थिंक ही वाज देयर विद मुंबई इंडियंस पहले भी, एंड ही इज राइट। और राइली मेरेदिथ, जो कि वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग ऑस्ट्रेलियन बॉलर है। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ प्रिटी बैलेंस सेटअप। मे बी फर्स्ट सीजन में थोड़ा सा दे माइट बी लिटिल शॉर्ट बिकॉज जोफ्रा आर्चर नहीं रहेंगे, पर हाँ। सेकेंड सीजन देयर विल बी अ वेरी सेटल्ड बॉलिंग लाइनअप आई थिंक। Yeah, there's actually even a speculation. I don't know. I'm sure that Harsha Bogle just said it in a jest. He was saying that probably MI might tell him, since you're recovering from your injury or whatever, you come here, you have to get the best facilities here from Reliance Yes. chain of hospitals, and we'll make sure that you are fit and we'll take care of you. You play for Mumbai this season also. Right. But I think it was just said in a jest. I don't think he will in all probability play for Mumbai this season. In fact, उनका reaction भी बहुत ये था. If you saw his Twitter feed, that was this जो होता है ना वो eye roll वाला एक इमोजी होता है, हाँ। उतना ही उन्होंने ट्वीट किया. आई थिंक बिकॉज वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने अमाउंट के लिए वो ये हो गए बिड करेंगे, स्पेशली बिकॉज ही हैड मेड इट ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हैड मेड इट वेरी क्लियर दैट he won't be available for this IPL, Right. Right. considering the World Cup. So I think yeah, it was a very good buy for Mumbai Indians, and so yeah, this is again मैं इसके लिए सिर्फ इसके लिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज यू सी द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स हियर. कल मैंने हर्षल पटेल का एक शेयर किया था, अगर आपको याद होगा, हाँ नो, हाँ फ्रॉम 20 lakhs और 90 lakhs, एंड ही हैज जस्ट उसका ग्राफ इट्स गॉन अप, एंड दिस इज मैसिव, राइट, दिस इज मैसिव. हाँ। और ये बट भी बट देन अगेन मुझे तो आई वॉज very surprised by the way CSK handled him last season, हम्म, right? I think he did not even play a single match. हाँ आई थिंक एंड ऑल्सो आई थिंक उसके पहले भी जब उनको चांस मिला है, Hmm. ही हैजंट बीन लाइक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। और आई थिंक ये नहीं वही पर संजय मंजरेकर के उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, थोड़े बिट्स एंड पीसेस। मतलब मे बी ये सॉर्ट ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, हाँ पर आप फुल रिलाई किसी भी स्किल सेट में नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से इनका वही स्टॉक्स थोड़े नीचे आ गए अभी। एंड thankfully has got a team, तो अभी still he has some chance to prove himself। तो वो देखने का बात है कि अभी how he will। हाँ. एंड आई थिंक एक्चुअली ही वॉज वेरी लकी कि वो ही इवन गॉट साइन, बिकॉज हम्म, मुझे याद है इवन इन 2018 सीजन जो था, जब जो ऑक्शंस हुआ था, इवन दैट टाइम ऑल्सो ही वेंट फॉर 6 crores, अप्रोक्सीमेटली 6 crores, एंड देन ही वेंट फॉर 9 crores. सो ही वॉज लिविंग अ चार्म लाइफ, बोलता है ना, वो फेस खत्म हो गया, हाँ नाउ ही हैज टू मेक इट काउंट. yes exactly। Yeah. So let me see now. Before we move on to the next, let me see if there's some questions. यहाँ पे उदय ने पूछा है कि what is your view on Raina being unsold and on the other hand Rahane was. So yeah, I mean it was very sad to see that. Honestly speaking, मुझे लगा था कि second round of auctions जो हुआ था उसमें रायना को कंसीडर करेंगे, कोई ना कोई टीम तो कंसीडर करेंगे, बिकॉज उनको इतना एक्सपीरियंस है. ही हैज़ दैट रिच एक्सपीरियंस ऑफ IPL. एटलीस्ट उनका वो एक्सपीरियंस हैंडी आ जाता. इवन इफ ही इज नॉट, इवन इफ इज नॉट इन द प्लेइंग 11, उनका वो एक्सपीरियंस हैंडी आ जाता है. बट आई थिंक फाइनली ऑल अदर फैक्टर्स ऑल्सो मैटर्ड, हिज एज, हाउ मच ही कैन डिलीवर एज अ प्लेयर and all. But yeah, it's very sad that one of Mr. IPL, as he called, कि his career had to end this way. ही इज अ लेजेंड इन आईपीएल। पर एक बात है Yeah, तो वही है कि एक बहुत दिनों तक कंपेटिटिव क्रिकेट उन्होंने नहीं खेला और एज भी काफी हो गया है। तो right. पीपल डू नॉट रियली गो फॉर समवन इज पास्ट हिज प्राइम। और एक मैं न्यूज़ देख रहा था, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज वेरी क्रेडिबल और नॉट, शायद उनके पिताजी का देहांत हुआ है रिसेंटली। तो देयर सम ऑफ द Oh, फ्रेंचाइजीज आर एक्सपेक्टिंग कि ही माइट नॉट प्ले दिस। आई थिंक ही हैज लेट देम नो दैट ही माइट नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द फर्स्ट सीजन। सो ये भी एक हो सकता है। मैं देख रहा था कहीं पे ट्विटर में, पर आई एम नॉट श्योर कितना क्रेडिबल है ये। तो ये भी रीजन हो सकता है कि सेकंड राउंड में भी उनका नाम नहीं आया है एकदम, क्योंकि इंडियन बैटर्स का कहीं कहीं पे तो जरूरत था। एंड आई थिंक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी कोई ना कोई तो बेट ले लेता सुरेश रैना ने। एंड yeah, लास्ट सीजन आप देखिए कि हरभजन सिंह पे केकेआर ने एक बेट लिया, जस्ट exactly. हैज दैट वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक ड्रेसिंग Yes. रूम वो होगा। तो
तो ये एंड सरप्राइजिंग। एंड सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है उनको, ही आई रिमेंबर ही ओपन, ही बॉल्ड द फर्स्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स इन एटलीस्ट 2 or 3 मैचेस, एन एक्सपेरिमेंट दैट डिड वर्क, बट या उनके एक्सपीरियंस पे ये करके ये किया था उनको केकेआर में, बट आई डोंट नो, ही सीम लाइक अ मिसफिट देयर, ऐसा हाँ, लग रहा था हिज हार्ट वाज ऑलवेज इन मुंबई इंडियंस इवन व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर सीएसके. So let me see if there's any. Uh, प्रेरित इज आस्किंग वाज इट वर्थ टू स्पेंड 15 crore ऑन ईशान किशन. हाँ, तो इस पे हम कल बात कर चुके हैं. तो लाइक मुंबई का एजेंडा सेट था, इट्स वेरी क्लियर व्हाट दे वांटेड टू डू. उनका टीम, दे वेर वेरी वेल अवेयर कि जोफ्रा आर्चर नहीं खेलने वाले इस सीजन. सो एज्यूमिंग दैट दे आर गोइंग टू स्पेंड 8 crore और 10 crore लेट से ऑन जोफ्रा आर्चर, ये प्लान करके, तो जो बाकी का अमाउंट था, ये अमाउंट में हम अपना टीम सेट करेंगे इस आईपीएल के लिए. हाँ, दैट्स हाउ दे वेंट अबाउट देयर टास्क this season. Yeah. Before I take your next question, let me just move on to the next one. So, yeah, what is your view on this? I mean, do you think I it was? think I mean, हाँ, he's in good form. yeah, no I doubt. understand why they have gone very like huge money on him. फिर and वही है कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, पर वही देयर इज वन इशू विद प्लेयर्स हैव डन वेल इन अदर टी20 लीग। वो बहुत बार ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आईपीएल में आके नहीं कर पाते हैं वो। Hmm. मतलब उस स्टैंडर्ड में नहीं कर पाते। आप द लाइक्स ऑफ क्रिस लिन देख लीजिए, फिर उसके पहले ल्यूक राइट, ये सब जो प्लेयर्स थे, मतलब बाकी लीग्स में बहुत अच्छे करके आए थे, फिर यहाँ पे नहीं कर पाए। तो लियाम लिविंगस्टन का वो तो एक चांस है, पर एंड उन्होंने आईपीएल में भी शायद लास्ट सीजन कोई आई थिंक राजस्थान के लिए शायद खेला था, पर इट ही डिड नॉट डू दैट वेल। तो सरप्राइजिंग कि इतना दूर तक गया, पर आई थिंक पंजाब इज टेकिंग अ बेट कि ये वापस से अच्छा खेले जैसे वो बाहर खेल रहे थे। बट डेफिनेटली थोड़ा Yeah. तो ओवर प्राइस तो लग ही रहा है मतलब। Yeah, and I think मुझे लगता है वो सिर्फ बैटिंग नहीं, they definitely are going to make use of his bowling services as well whenever required. ऐसे, हम्म। right? He is not good, definitely not going to be a regular, but I think he is going to bowl at some stage in the tournament. यस, बट वही है कि मतलब फॉर दैट 11.50 इज समवन हु विल बी डेफिनेटली इन योर स्टार्टिंग 11, मतलब जब आप इतना स्पेंड करो तो Hmm. तो वो एक फैक्टर है। तो इसीलिए मेरे को लगता है स्लाइटली ओवरवैल्यूड है, पर Yeah, अगर इफ इट वर्क्स आउट देन तो ठीक है, पर exactly. एट दिस पॉइंट इज स्लाइटली ओवरवैल्यूड आई थिंक। हम्म. एक्चुअली मैंने जस्ट रियलाइज किया कि दिस, ये जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई कैन हाईलाइट द क्वेश्चंस दैट विल शो अप ऑन स्क्रीन. सो ओह दैट्स नाइस। इससे जिसने क्वेश्चन पूछा है वो भी इसको नो, ही विल नो दैट हिज क्वेश्चन इज बीन आंसर्ड. सो लेट मी ट्राई दैट, यू नो. आई मीन दिस, अच्छा, दिस इज रियली कूल मैन. या सही है ये. ओके, दिस अ कूल फीचर, मुझे कल पता नहीं था ये, दिस फीचर है ना. So yeah, I mean Morgan went unsold. Your opinion? Uh, Not at all surprised. हम्म। He was purely there on वो उनके कैप्टेंसी स्किल्स के ऊपर ही केकेआर में टिके थे. He was, I हाँ, think, complete to flop last season as far as batting is concerned. Yes, no doubt. मतलब आउट ऑफ नो वेयर जब आईपीएल का फर्स्ट हाफ हुआ था, एंड देन बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस, यू नो, इट गॉट पोस्टपोन्ड. No one expected KKR to be in final at that stage, you know. राइट। Before the heroics of Venkatesh Iyer came and no, blew everyone off. So yeah, I mean, there's nothing. I don't think many people were surprised. हम्म। What is your view? Were you surprised or you expected that he will go unsold? आई वाज सरप्राइज्ड दैट ही वाज़न्ट पिक्ड एट ऑल, क्योंकि Okay. ये भी क्योंकि एकदम काफ़ी एक्सपीरियंस बैट्समैन है और कैप्टेंसी लीडरशिप मटेरियल है, और उसके पहले ही हैज़ डन रीजनेबली वेल। मतलब लास्ट सीजन वो एकदम ही फ्लॉप था, पर उसके पहले वाला सीजन केकेआर के लिए ही हैज़ प्लेड फ्यू गुड नॉक्स। तो आई वाज थिंकिंग कि एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में मे बी ही हैज़ गॉट अनसोल्ड, बट री ऑक्शन में या सेकंड वो एक्सेलरेटेड राउंड्स में कोई ना कोई तो इनको ले लेगा शायद। पर Right. वो नहीं, हम मे बी अगर ये अपना बेस प्राइस थोड़ा सा कम कर देते तो मे बी कोई ना कोई ले लेते इनको। पर अ, वही है कि एक रीसेंसी बायस तो रहता ही है, जो लास्ट सीजन उनका बहुत बुरा परफॉर्मेंस था तो उसी का इफेक्ट हुआ है। Right. Right. Right.
एंड उन्होंने शायद बाद में भी जो इंटरनेशनल्स खेले उतना कुछ नहीं कर पाए थे। हाँ, रिद्धिमान साहा, आई रिद्धिमान थिंक ये, हाँ बोलो। या आई मीन ये मतलब, आई रिमेम्बर ये जब इनका जब ये बिडिंग हो रहा था, ओके, एट 6:15 अराउंड, हाँ देर वॉज अ ब्रेक, देर वॉज अ कमर्शियल ब्रेक, ओके, सो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द टीम्स कि क्या क्या टीम है, एंड यू नो वो जस्ट टू मेक सम नोट्स फॉर टुडेज लाइव स्ट्रीम, एंड देन सडनली मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ सब, स्पेशली गुजरात टाइटन के फॉलोअर्स या जो भी फॉलो कर रहे हैं, यार कीपर कौन है, कीपिंग कौन है, कीपिंग भी पांड्या करेगा, हार्दिक पांड्या विकेट कीपिंग भी करेगा तो like just 2 rounds of bidding to go, and they had no wicket keeper राइट at that point. So I don't know, like, uh, if they took him in matlab, because they had no option, their planning didn't go too well, but then it was kind of funny to see that उस टाइम पे उनके पास कीपर नहीं था, and then in 2 consecutive biddings they got 2 keepers. They got Matthew Wade in the next bidding as well, in the very next bid. हाँ हाँ So it was, yeah, I mean, it was very funny to watch live राइट राइट thing. हाँ उस टाइम मैं भी देख रहा था बिकॉज केकेआर केकेआर आल्सो डिड नॉट हैव अ वेरी गुड लाइक वेरी सॉलिड कीपर, क्योंकि उन्होंने शेल्डन जैक्सन को लास्ट लास्ट कल लिया था। और शेल्डन जैक्सन हैज बीन पार्ट ऑफ केकेआर फॉर अ लॉन्ग टाइम और वो कभी खेलते ही नहीं है उतना, और टीम में और कोई सेटल्ड विकेट कीपर था ही नहीं। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि गुजरात और केकेआर विकेट कीपर के पीछे जाएंगे। तो हाँ, फर्स्ट सैम बिलिंग्स जब आए तो केकेआर ने बिट किया, गुजरात ने कुछ अपोज नहीं किया, तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग कि गुजरात अभी भी सो रहे हैं, क्या हो गया, अभी विकेट कीपर सेकंड इसलिए हाँ, नहीं ले ऐसा रहे। ही फिर अचानक उन्होंने दो ले लिया। रिद्धिम दे हैड टू गो फॉर इट, क्योंकि और तो कोई था ही नहीं, मतलब दे हैड टू या गो फॉर वेड एंड रिद्धिमान साहब। या राइट, एंड बट यहाँ पे, या एक यू आर एक सेइंग समथिंग. हाँ, एक आई वाज सरप्राइज्ड, आई थिंक बेन मैकडरमट, आई थिंक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही इज इन वेरी गुड फॉर्म एंड विकेट कीपर बैट्समैन। या. आई थिंक दिसंबर में उन्होंने बिग बैश में 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज मारे। वेरी सरप्राइज्ड ही वाजंट पिक्ड बाय एनी ऑफ द फ्रेंचाइजी। उनका बेस प्राइस भी इट वाज एट 50 lakhs, नो वन बिड फॉर हिम। तो या दैट वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं मेरे को लग रहा था मे बी मैथ्यू वेड या सैम बिलिंग्स के पहले ही माइट गेट पिक, तो वो नहीं हुआ। राइट राइट राइट. एंड एक्चुअली आई थिंक सैम बिलिंग्स को भी जा सकते थे गुजरात लायंस, बट आई डोंट नो, सैम बिलिंग्स और साहा, इट्स, यू कैन से दे आर इंटरचेंजेबल. सैम एट बिलिंग्स दैट, का आई थिंक ही इज वेरी टेंटेटिव अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, जितना मैं उनको देखा हूँ। ओके, राइट. हाँ, हाँ, तो आई वाज आल्सो लिटिल अनकन्विंस्ड सैम बिलिंग्स, पर ठीक है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ही प्लेज ऐसे मिडिल ऑर्डर में, इज ओकेश, मतलब अगर ज्यादा स्पिन, बहुत डेंजरस स्पिन बॉलर से एक्सपोज ना हो तो ही विल डू वेल, आई थिंक। या या. सो देयर इज, yeah, I think definitely one of the best buys. I mean, the confidence he is in right now, this player. So for 1 crore, actually, I was surprised when he was not picked during the first time his name was called. So for 1 crore, I think he was a very good bet. It was a very good deal. And yeah, I think we just discussed on this, so we will just talk about it once again, because I think many people joined later. So like, where do so many teams went for England players? Because schedule classing, I think, simply for the reason that this team has been built for 3 years, Right. right? So this is not just for one season, so they have to look forward to the other upcoming 2 seasons as well. So considering all those factors, and not all England players, I think, are unavailable. The players that ECB has told that is not available for IPL, only those players are not available for Right. IPL, right? And yeah. काफी लोग टीम डेविड के बारे में पूछ रहे हैं, जो सिंगापुरियन किसके बारे में? टीम डेविड, काफी हाँ हाँ, बिडिंग उसके हुआ। बारे में इनफैक्ट ही वाज, उसके बारे उसको मैंने ये किया था, आई मीन, आई हैड प्लान टू टॉक अबाउट हिम आल्सो, बिकॉज या, अगेन आई थिंक इससे अपना, आई मीन, मुंबई इंडियंस का बैटिंग अभी एक अलग ही फायर पावर मिला है, आई मीन, राइट नाउ. एंड दैट मिडल ऑर्डर, if at all, Pollard finds his rhythm in this season, then I think this is, right now, this is one of the best batting lineups out there.
हाँ आई थिंक और बट टीम डेविड रिसेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीएसएल में एक अच्छा, आई मीन सम 29-30 बॉल्स में उन्होंने 70-72 कुछ स्कोर किया था। हाँ हाँ टिम डेविड एंड का फॉर्म काफी अच्छा है, बिग हिटर इन द मिडल ऑफ द ऑर्डर। आई थिंक थोड़ी बॉलिंग भी कर लेते हैं वो शायद। तो इवन केकेआर वर गोइंग वेरी एग्रेसिवली एंड देन व्हेन मुंबई एंटर्ड तो उसके बाद कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज दे राइट, हैड लॉट ऑफ मनी इन द बैंक। So they took, I think it's a good gamble to have, and इन्होंने actually इन्होंने फर्स्ट सीजन आई शायद आरसीबी के लिए एक सीजन उन्होंने खेला हुआ है, ऑल्दो उनको हाँ, ज्यादा मौके नहीं मिले, तो आईपीएल एनवायरनमेंट से ही इज मतलब accustomed, इट वोंट बी लाइक फर्स्ट टाइम फॉर हिम। तो या मे बी इनका भी प्राइम मुंबई इंडियंस में देखने को मिलेगा, तो दैट इज अ या आई थिंक ही इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ फिनिशर व्हेन ही कम 3 डाउन 4 डाउन, probably I guess 3 down 4 down. And who do you think will be the captain of RCB? Fab Duplessis or Fab Duplessis, right? That's मुझे भी वही लगा. I mean, that was the reason they went for him yesterday, and I think they have got a good captain, Fab. So केकेआर के let's see. स्क्वाड के रेटिंग काफी लोग बोल रहे हैं, and पहले भी कुछ कुछ लोग पूछ रहे थे। Yeah, तो केकेआर की ओवरऑल मैं कहूंगा कि आई थिंक दे मेस्ड इट अप बिग टाइम yesterday. They got bullied in the market, going for players हाँ, who weren't probably that good. And थोड़े उन लोग के स्ट्रैटेजीज भी उतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, तो राणा मावी के ऊपर लाइक ओवर 8 करोड़ के बिड्स, तो दैट रियली मेस्ड अप देयर बजट यहाँ नेक्स्ट डे में। फिर yeah, क्या हुआ कि इन लोगों के पास दे हैड द लास्ट में ऐसा हो कि इनके पास पैसे तो थे पर देयर weren't प्लेयर्स ऑफ देयर लाइकिंग, तो yes, yes, काफी ऐसे। बट क्रेडिट टू देम कि लास्ट में उन्होंने किसी तरह एटलीस्ट सब एरियाज तो उन्होंने कवर कर लिया, सो देयर वोंट बी लाइक शॉर्टेज ऑफ प्लेयर्स। hmm, बट मे बी देयर इज लिटिल बिट ऑफ लैक ऑफ क्वालिटी स्पेशली इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। आई फील अगर पैट कमिंस थोड़े इंजरी प्रोन है, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ फिक्सचर क्लैशेस भी होंगे। एंड्रे रसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट इन बॉलिंग, बट उनका भी फिटनेस पे थोड़ा सा इशू है yes, definitely. लास्ट And में। हाँ so we have Umesh Yadav is मतलब blow hot bowl, blow cold type of bowler, I would एंड say. उमेश यादव को क्या था कि एक एक टाइम पे वी डिड नॉट हैव एनी लाइक गुड फास्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स अपार्ट फ्रॉम मावी, मतलब रिकॉग्नाइजेबल हु हैज प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल। तो हाँ, एकदम लास्ट राउंड में वी दे आइदर हैड टू गो फॉर ईशांत या फिर उमेश, तो दे वेंट फॉर उमेश। होपफुली विथ हिज एक्सपीरियंस he'll put in some good impetus into the team, and Umesh is someone who has been with the KKR setup pehle. He has been champion with the team, so hopefully he'll be able to contribute. Team Saudi again, they backed him. I think Team Saudi was decent in the second half of last season. So yeah. Saudi, so abhi more or less, but I'm little concerned about the domestic homegrown players that they have gone for. किसी का Mm-hmm. भी I मैंने think the Alex Sales was a good buy at the price they got. Alex Hales, they had, Alex Hales was a good buy, but Huh. I'm not sure how Sam Billings and Alex Hales would play together in the line. Exactly. हाँ, Right. Correct. तो वो एक That's इशू है। that's going to be a big challenge for them. हाँ, बट आई थिंक क्यों- दैट अगर सो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो केकेआर मैनेजमेंट इज होपिंग रहाने टू ओपन विद वेंकटेश अय्यर। तो इन केस रहाने डज नॉट परफॉर्म, मे बी हेल्स कम्स इन एंड देन Hmm. सैम बिलिंग्स गोज आउट ऑफ द टीम एंड देन प्रोबेबली शेल्डन जैक्सन कम्स इन टू कीप। तो Yeah. यही कॉम्पोजिशन रहेगा। Yeah. It was. Overall, slightly disappointed. I think I'll rate this team like 5 out of 10 ऐसे। Yeah. I mean, you yourself being a KKR follower, then I understand हाँ why you must be disappointed with this. I think वो नीतीश राणा का कल फ्रॉम वहां से उनका गेम चेंज हो गया पूरा. हाँ Karunaratne, I'm slightly like carefully optimistic about him. I think he Yeah. rolls at a decent pace uh, and is reasonably good with the bat as well. So maybe he could be a surprise package. So Yeah, even Mavi has got like bold game-changing spells hmm. in few matches that we saw last year. So yeah, he's also a good और और एक prospect. I would like to like And Anupul। yeah, हाँ, मैं बोल रहा था कि अनुकुल रॉय जो जो लास्ट सीजन शायद मुंबई इंडियंस के साथ थे,
Hmm. इनका जब खरीदा तो मैं देख रहा था काफी मुंबई फैंस वर डिसअपॉइंटेड कि मुंबई डिड नॉट गो फॉर अनुकुल रॉय. आई थिंक ही इज अ वेरी एक्सेलेंट फील्डर एंड a lot Yeah. of people last season were saying कि he should have been promoted ahead of Krunal Pandya क्योंकि दोनों के more or less same skills है like लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग एंड मिडल ऑर्डर फिनिशर ऐसे. और तो इनका एक्चुअली इनके होम टाउन में इनको लाइक छोटा रविंद्र जडेजा कहा जाता है. तो he's someone with good potential and मुंबई इंडियंस के काफी फैंस जो फॉलोअर्स थे they wanted मुंबई इंडियंस to go for him again now that Krunal Pandya is not there in their team. uh, तो ये एक बात है. एक्चुअली फनी एक इंसिडेंट हुआ जब अनुकुल को वेंकी माइसोन ने बिड किया तो ही टर्न टू द अंबानीज एंड सेड थैंक यू फॉर नॉट बिडिंग फॉर देम. तो ये एक Oh. छोटा सा सीन हुआ था Oh. आफ्टर Okay. दिस. I missed that. तो लेट्स सी हाउ ही फेयर्स. Okay. And I think ये this is my view and कि मतलब मोहम्मद नबी मतलब ऑलवेज आई फील काफ़ी ओवररेटेड प्लेयर है फॉर क्वाइट सम टाइम ना क्वाइट सम टाइम. सो आई डोंट नो मतलब हाउ यूजफुल ही इज गोइंग टू बी टू राइट केकेआर सेटअप एंड हाउ इज गोइंग टू फिट राइट. इन आई दिस थिंक ही बॉलिंग. हैज बीन ब्रॉट इन एज अ बैकअप टू सुनील नारिन. मतलब हाँ, इनके. might be. That might be the only logic here. So yeah, and just a second, I'll just close this window. And ये मैं इस पे सोशल ट्विटर पे देख रहा था बहुत लॉट ऑफ पीपल नो बोथ फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश दे वर अपसेट कि शाकिब. शाकिब इवेंट अनसोल्ड. सो आई थिंक इसके पीछे शाकिब उल हसन को नहीं लेने के पीछे टू मेन रीजंस है. वन इज द वन दैट यू सॉ यू आर सीइंग इन द कैप्शन राइट नाउ दैट उन्होंने जो उनका बेस प्राइस रखा 2 crore. ओके, वंस ही वॉज नॉट आउट ऑफ कंटेंशन इन द फर्स्ट राउंड तो सेकेंड राउंड में बाय द टाइम हीज नेम केम अप यू नो जितने अमाउंट बाकी थे पर्स में लाइक 3 crore 4 crore इट वॉज ऑल इन सिंगल डिजिट्स. राइट राइट So yeah, so going for no for that amount for him was going to be risky, राइट. and especially when this many few people, I mean few people know this that Bangladesh Cricket Board had already made it clear to BCCI that he won't be available for IPL from May 8 to 23 because they are going to play a test series with Sri Lanka. So that might also be the factor. I राइट mean, not saying that that be the only factor because अगर ये logic हुआ तो Mumbai Indians went in for Jofra Archer also. So yeah, I mean, definitely he was also not considered for the future scheme of things. Yeah. और So एक. these these two factors, his base price and plus his unavailability, uncertainty for this season went against him. राइट एंड आई थिंक एक और इशू है. आई थिंक देयर इज नो डाउट शाकिब इज अ वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर और काफी सालों तक ही हैज बीन एट द टॉप ऑफ लाइक ऑलराउंडर्स के चार्ट्स में. पर Yeah. एक ऐसा पोजीशन है ना. आई थिंक शाकिब फ्लरिश करेंगे अगर ही प्लेज इन नंबर 4 या नंबर 3 मतलब टॉप ऑफ द ऑर्डर. और हर टीम का टॉप 3-4 ना इंडियन सॉलिड बैटर्स या और कोई फॉरेन प्लेयर्स से स्टैक्ड है. मतलब आइदर यू नीड अ गुड फिनिशर जहाँ पे फॉरेनर जरूरत होता है या फिर दूसरे मतलब टॉप 3-4 में वो कोई भी एक्चुअली टीम्स के पास आई थिंक वैसे अवेलेबिलिटी नहीं है. आप देखेंगे केकेआर में भी लास्ट सीजन जब शाकिब खेलते थे तो उनका Hmm. पोजीशन तो काफी पीछे आते थे तो उस टाइम वो इम्पैक्ट भी नहीं कर पाते थे. एक्चुअली वो उनको खेलना चाहिए था. Right. टॉप 3-4 केकेआर के ऑलरेडी कवर्ड थे विद वो गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, राणा. तो शाकिब को ऊपर नहीं खिला सकते. तो उनका प्लेइंग स्टाइल ऐसा है कि उनको अगर ये इंडियन होते तो इनका काफी डिमांड रहता. पर फॉर अ फॉरेन प्लेयर उस टॉप 3-4 में तो कोई भी टीम में जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. Right. And I remember last time many people were mostly upset because when KKR was playing a do or die match, एक round matches में, I think Shaki played match winning innings there that actually saw them into the next stage. हाँ हाँ. I think there was 7 needed of the last over वो वाला. हाँ, and he was the batsman, but yeah, that was his significant contribution last season. Okay, and okay, so Jainil asks, "Am I don't have any extremely reliable bowlers after Jofra and Bumrah? What do you think this will this affect their economy rate? What is your view on this?"
आ, थोड़ा सा तो इनएक्सपीरियंस है आई थिंक, एंड स्पेशली फर्स्ट सीजन में जोफ्रा नहीं रहेंगे तो बुमराह के ऊपर काफी प्रेशर है। एंड राइट। स्पिनर्स आप देखेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर, मतलब आई थिंक बेसिल थम्पी अगेन वेरी, थोड़ा सा तो इनएक्सपीरियंस है, एंड पहले भी थोड़े ज्यादा इकोनॉमी रेट इनके हुए हैं, तो दैट इज एन हाँ। इशू। टाइमल मिल्स कुड बी यूजफुल आई थिंक, ये एक दो सीजन ही हैज डन वेल, पर थोड़े इनकंसिस्टेंट है। जयदेव उनादकर अगेन एक अनफुलफिल्ड पोटेंशियल जो And he आ had रहे become a troll back then. हाँ, I तो think hopefully he has to will step up now he that has to step up now. with without Jofra Archer, एंड स्पिनर्स में भी थोड़ा सा तो मतलब मुर्गन अश्विन But का। then I think a lot of people also don't know that Taimur Mills is a very good bowler at a death. राइट। So that will also come in handy. हाँ With we never know when Bumrah or Bumrah for this season has an off day. राइट। So that will definitely help. So it's not looking that bad. I mean, at least on paper. Since many people have asked here, this squad is looking quite balanced to me. And once Jofra Archer joins them in the next season, I think they are going to be a very competitive squad, I राइट। believe. राइट। राइट। And let me just see if there's anything else I missed. So we'll just have a look at the squads here, okay? So because I think we barely spoke about Chennai yesterday also. हाँ। So yeah, what is your first view of this Chennai squad right now? देव ट्राइड टू रिटेन, मतलब उन लोगों का पहले का जो कोर था। अमंग Hmm. न्यू कमर्स आई थिंक वन गुड साइनिंग इज डेवन कॉनवे। Hmm. काफ़ी अच्छे इंटरनेशनल स्टेज में न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी अच्छे खेल रहे, तो Yeah. ये एक अच्छा सॉलिडिटी दे सकते हैं इन लोगों को। Hmm. और अदर देन दैट आई थिंक एडम मिलने अच्छे बॉलर है। फॉरेन साइनिंग्स तो मेरे को लग रहा है अच्छे ही हुए हैं। क्रिस जॉर्डन काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। हाँ, थोड़े-थोड़े कभी-कभी ज़्यादा रन्स इकोनॉमी रेट इनका थोड़ा कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है, बट देन अगेन ही इज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। तो क्रिस जॉर्डन इज़ आई थिंक अ डिसेंट साइनिंग। शिवम दुबे आई वाज़ सरप्राइज्ड, आई थिंक दे वेंट अ लॉट फॉर शिवम दुबे जो थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं हाँ. ओवर द इयर्स। अच्छा, जो अंडर 19 हांगरेकर, ही आई थिंक ही हैज सम सीरियस पेस, जो हमने लिमिटेड उनको देखा अंडर 19 वर्ल्ड कप में, लुक्ड वेरी प्रॉमिसिंग, एंड ही इज़ अ गुड हिटर एज वेल with the bat. So that is someone very promising, and I think Chennai Super Kings fans, they will be very excited to see him in the future. And other than that, I think it's a pretty set lineup. Santner has returned back. Uh, Pretorius, I'm not exactly sure. I think he's also sort of a, when he bowls, he comes at the end. I think he's a death over specialist as well and bats a bit. Uh, Hmm. साउथ अफ्रीका के T20 सेटअप में काफ़ी रेगुलर है, तो आई थिंक ओवरऑल डिसेंट बाइस, एंड ठीक ठाक है। अगर आप दूसरे टीम से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों का इनसे बुरा हाल है, तो Yeah. दे विल बी होपफुल And दैट दे कैन गेट इनटू टॉप फोर। the more I look at the overall auctions, the ridiculous prices that some players went for, and the more I believe that the more you realize how valuable David Warner's bid was yesterday. Even even Fab Duplessis and David Warner's players like this, they are going for much relatively lesser amount than players who probably don't deserve that kind of amount. You know, so yeah, if you let's move on to the next squad. Let me see, check here. So I think we already talked about Yeah. KKR, right? Hello. हाँ, yeah, we did, yeah. Yeah, we already talked about it. So actually, there's a funny incident, not really incident, जो बीच में break हो रहा था auctions के बीच में, तो one of these presenters uh, asked, uh, I won't say who, I mean, asked that celebrity who was present there, what do you think about the team? Do you think that Shreyas Iyer will be the captain? And that person was, that will be decided by the management. But what do you think about that player, in their team? So I thought that, could cricketing something, कुछ मतलब at least
like he bats well, balls well, something like that. हाँ हाँ. No, he's a very humorous person. He brings so much of humor in the dressing room. I was like, what? He brings so much of dressing room, and he keeps the atmosphere so much positive. And like, तो केकेआर के मैनेजमेंट का तो आज काफी मतलब क्रिटिसिज्म हुआ. हाँ, I know. So, just a second. Yeah, This is a very interesting Hmm. squad. I was like, No, the Lucknow Super batting, Giant. I think batters, the group, entire group looks very solid with KL Rahul, Quinton de Kock, Manan Voda, Yeah, काफी experienced है. yeah. Evan Lewis also have played quite a few IPL matches, तो promising player है. Marcus Stoinis in the middle order. अच्छा, Jason Holder And they again. got even Evan Levis also today. I think he went unsold in first round, right? Right, right. So, and there's Huda and Pandya out there. So, Hmm. I think pretty very promising lineup. I think I इनको think they did a very good job considering they were the first. They are Hmm. starting from a scratch. Yeah. They did a decent job, I would say, Right. and definitely, I mean, they are going to be a very competitive side. इनके bowling में मेरे को थोड़ा सा डाउट है बिकॉज मार्क वुड ऑल्दो इज वेरी लाइक ही हैज इनका बहुत ज्यादा पेस है पर हाँ, देयर इज एवरी चांस दैट वो पेस है तो he goes for बैट्समैन runs. हाँ He ही goes for माइट गो runs. फॉर रन. आवेश खान वेरी प्रॉमिसिंग बट देन अगेन वेरी यंग बॉलर. और उसके बाद के जो बॉलर्स है अंकित राजपूत ये लोग काफी सारे इन लोग सीजन्स खेल चुके हैं एंड दे हैव नॉट रियली लिव्ड अप टू देयर पोटेंशियल. रवि बिश्नोई अगेन वेरी यंग स्पिनर, वेरी गुड स्पिनर बट वेरी यंग. तो थोड़ा इनएक्सपीरियंस तो है इन लोगों के आपके अगर बॉलिंग लाइनअप देखेंगे तो. और अदर देन Yeah, दैट आई थिंक द ऑलराउंडर एंड द बैटिंग का जो बैटर्स का सेट है दैट इज वेरी स्ट्रांग. yeah. Just a second. We spoke about this, na? राइट. I mean, you can see it on your screen. या Yeah, आई कैन सी. yeah. I'll be मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो I might sound biased because I am a Mumbai Indian follower, a Mumbai Indian fan. But yeah, this looks quite promising. जो लोग भी पूछ रहे हैं, how does MI squad look? Definitely looks good. Uh, yeah, bowling में I mean as long as अभी right now Archer is not there for this season, so who do you think will open with Bumrah? Uh, आई थिंक इट हैज टू बी. it अगर has to be. जयदेव उनतकर अगर खेले तो आई थिंक ही शुड हाँ. गो विद द न्यू बॉल. और नहीं तो इट हैज टू बी अदर देन बसिल थम्पी आई थिंक. और तो कोई Yeah. ऑप्शन नहीं है दोनों में से. टाइमल मिल्स आई थिंक वो लोग डेथ ओवर्स के लिए दे विल सेव अप हिज ओवर्स. मतलब अगर वो लाइनअप पे रहे तो मे बी ही माइट बोल वन ओवर इन द पावर प्ले बट देन बाकी 3 ओवर्स ही माइट बोल डाउन द. एक मिडिल में बॉल करेंगे शायद और दो शायद एट द एंड ऑफ द. Yeah. और इसमें someone asked about I think probably this, I mean, God Gamer, he was not there yesterday. Obviously, I mean, one of the one of the better buys in this season. राइट राइट. So I think it will be interesting to see how he performs. एग्जैक्टली. What about okay, okay, sorry. I don't know. I mean, what about David Malan? I don't recollect what happened. I don't recollect. He was David not. Miller, he was not picked. I think he He was was not. not picked. Oh, Yeah. okay, okay. Oh, I think few months back also he was the number one T20 batsman. ah. But You, yeah. I mean, a change of fortunes. yeah. I'm just looking for some because it's been. I'm just looking for some questions here. Yeah, yeah. Okay, uh, guys, don't try to ask specific questions like, and not generic questions like which team looks best and all. So okay, chalo. Abhi matlab many people are asking, so let's clear it out. Hmm. This question because many people have asked this. You say, I mean, right now, which team looks best on paper to you?
Uh, First you say, then I'll tell my. I think Lucknow Super Giants. I think they have been good under. I think Gautam Gambhir उनका जो think tank था, they have done well actually. तो एक्चुअली Right. काफी सारे क्लोज है, ऐसे कोई स्पेसिफिक आप बोल नहीं सकते कि यही बेस्ट है, पर लखनऊ सुपर जायंट्स का आई फेल्ट ही दे वर प्रीटी गुड, आई थिंक सेटल Yeah. मोर और लेस बैलेंस था इन लोग I agree with you. In fact, my answer is also same. Uh, this, I mean, Mumbai Indians and Lucknow Super Kings, I would say, uh, are also my picks for this season so far. हम्म, And again, I mean, looking best on paper, and performing are two different two things. different things totally. It, RCB has, no offense to RCB fans, but RCB has always looked good on paper. हम्म, But hopefully, as a new team, so we see a change of fortunes with Fab du Plessis as captain. Yeah, so अभी हम आरसीबी के बारे में बात ही कर रहे हैं. So what is your view on RCB's team right now? हमने कल काफ़ी इस पे चर्चा किया था. Like they spent about 18 crores on two players, and they were in a spot of bother. But still, do you think they still managed to build up a decent team? आई थिंक उन लोगों का मिडिल ऑर्डर अभी भी थोड़ा सा वो फ्रेजाइल जो उन लोगों का पहले भी रहता था वो अभी भी है इसमें. Hmm. अब उसका स्क्वाड अभी आर यू शोइंग इट ऑन द स्क्रीन क्या? या उनका एक्चुअली मुझे ये मिला नहीं. आई मीन, अच्छा. ये जो भी मुझे ट्विटर पे मिला था मैं ये करते जा रहा था. हाँ. बट जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट शेयर दिस स्क्रीन विथ यू. दिस स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग. आई थिंक उन लोगों का लाइक बैटिंग ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो या सो दिस इज द स्क्वाड. हाँ, तो इन लोगों का टॉप हेवी थोड़े बैटिंग है, पर फिर मिडिल हाँ. ऑर्डर स्लाइटली मतलब इनएक्सपीरियंस्ड अगर आप कहें तो दिनेश कार्तिक के ऊपर दे विल रिलाई अ लॉट टू प्ले दोस कैमियोस अगेन. Yeah, but that again says a lot about the quality of the squad they have picked, right? Like, I mean, I don't mean any disrespect to Dinesh Karthik. Definitely is a great international player, but uh, at this stage, मतलब you cannot be so much dependent upon him at this stage. He is a kind of player right now. अभी वो उनके career पे जो stage पे है, if they RCB loses a lot of wickets, let's say in the first few overs, so he is someone who brings stability, who can bring stability in the middle order. राइट. Yeah, but let's say they are in a position where they need like 50, 60 odd runs in 3, 4 overs, दैट and इज he's on डिफिकल्ट. strike. You cannot bank on him right now. I don't know. Maybe he'll prove me wrong. I mean, he plays In this those season. cameos once in a while, but हाँ. थोड़ा-सा अभी उनका वो भी अभी रेगुलर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो उनका भी ये थोड़ा-सा तो डाउट है. So in bowling they have, I think it will be led, the bowling attack, the fast bowling attack will be led by हेज़लवुड और Josh Hazelwood and Mohammad Siraj, मोहम्मद सिराज. and that's I think आई थिंक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन Jason. भी उतने खास नहीं है. कर्ण शर्मा. Of course, there's Harshal Patel. हर्षल पटेल. ओके, हाँ, दैट इज Yeah, that's what. I just hope that uh, because I really liked. I mean, what he did last season was out of the blue. I mean, no one expected him. मुझे लगा था एक मैच चलेगा, दो मैच चलेगा, तीन मैच चलेगा, but he was consistent throughout the season. And let's just hoping that he does not end up as a one season wonder, क्योंकि ये हमने काफ़ी देखा है. हाँ, राइट. वी हैव सीन दिस इन लॉट ऑफ अभी मतलब 2014 2015 के कुछ ऐसे प्लेयर्स है जिनके हम अगर नाम बताए तो शायद किसी को पता भी नहीं रहेगा, बट दे वेर लाइक देयर वाज दिस प्लेयर फ्रॉम पंजाब, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, पॉल वेला कुट्टी समथिंग. हाँ, पॉल वल 30. हाँ. पॉल वल 30 So I, जिनमें. I I remember he was seen as like a future bright potential. अभी he's not even in the equation. So a lot of such players just come and go और पता भी नहीं चलता है हाँ, ऐसे. राजस्थान Let's see. रॉयल्स में अजनोदकर बोल के एक बैट्समैन आए थे 2008 सीजन में. ही यूज्ड हाँ. टू ओपन विद ग्रेम स्मिथ. फिर उसके बाद ही आल्सो वेंट आउट ऑफ द प्रोग्राम. वैसे वन सीजन वंडर्स काफी आए थे. एक और राजस्थान के आई थिंक देयर वाज दिस बॉलर, मैं नाम भूल गया. ही हैड एन प्रॉब्लम विद हिज एक्शन उसके बाद. वाज फ्रॉम अ वेरी Oh. मॉडेस्ट बैकग्राउंड. तो अभी उनके नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर आई थिंक ही आल्सो सॉर्ट ऑफ फास्ट बॉलर थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जो शेन वॉर्न का जो ग्रुप था उसके अंदर. हाँ हाँ हाँ. अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट डू.
So I think more or less अभी this squad is there's a lot of I mean work that needs to be done. अभी कुछ बोलना would be like I mean we cannot say right now I cannot say that this is the best squad for them RCB, but hopefully you know let's look at this team. ये कौन सा इसका या पंजाब किंग स्क्वाड. Just a second, I'll just share the screen. Okay, yeah. हाँ, Punjab Kings का I think they did a very good job getting in Shikhar Dhawan. Yeah. He will be the captain as well. आज आज जब अनिल कुंबले का इंटरव्यू चल रहा था तो उससे भी यही सजेस्ट हो रहा था कि आई थिंक शिखर धवन माइट बी द कैप्टन. तो शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, जॉनी बेस्ट्रो टॉप ऑफ द ऑर्डर में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. फिर लियम लिविंगस्टोन भी है आपके ऑलराउंडर्स में. शाहरुख खान जो कि Yeah. बिग हिटिंग इंडियन प्लेयर. तो आई थिंक प्रीटी सॉलिड टीम. आपको And the bowling department, I mean, it will be led by Rabada. रबाडा, And अर्शदीप तो है ही जो उनको उन्होंने yeah. रिटेन किया था. संदीप शर्मा काफ़ी सालों से पंजाब में खेल रहे हैं तो ही नोज़ द सेटअप एंड ही इज़ अ डिसेंट बॉलर आई थिंक एट द Hmm. स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स. तो स्विंग बॉलर है. राहुल चहर गुड स्पिन And yeah, पोटेंशियल. they were very lucky that they have got Rahul Char at a time when he's very high on confidence. राइट. I think he was playing. He was doing very well for Mumbai Indians from past 1 or 2 seasons. So और ये उनका आप speed. हाँ, हाँ, बोलिए. No, that's what I said. I mean, they are lucky that they got Rahul Char at the right time when he's peaking, राइट. and I think his best is yet to come. और एक इंटरेस्टिंग बाय ओडियन स्मिथ का जो Hmm. वेस्ट इंडीज के हार्ड हिटिंग लोअर ऑर्डर बैट्समैन का बॉलर. अभी हमने उनका एक्सपर्ट्स अभी इसी सीरीज में देखा कि जब उन्हें सेकंड मैच में काफ़ी स्केयर दिया था हमें Yeah. अगेंस्ट जब वेस्ट इंडीज़ के साथ हम लोग खेल रहे थे. तो ही इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेयर. लेकिन वही थोड़ा सा वो रहता है कि ही माइट गेट फाउंड आउट बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक एंड ऑल. बट जिस दिन ये चल गए तो लाइक रसल जैसा इम्पैक्ट, एंड्रे रसल जैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं ये ऑडियंस. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बाइट. Yeah. They got Odean Smith also, right? Yeah. हाँ, ऑडियंस में. Odean Smith also. So there's some. I was just going through the comments to see if I missed out on anything. There's appreciation for you here. Just letting everyone know. दैट्स माय फियांसे. Okay. Okay. I think the most questions here are mostly generic in nature, which squad looks best on paper. I think let me just confirm if I am missing out any comments, because the last comment I see here on 10:35, but it's 10:50. So let me just toggle on and toggle off here comment. कभी कभी उसमें दिखते नहीं comments. So, yeah, the comments are not updating here. I don't know why. Okay. So I'm just reading out comments from the stream. Okay. On my mobile. Okay, Andy is asking why did Lucknow run out of money so early? क्योंकि उनका स्क्वाड सेट है. They had got 21 players. It's not about कि मतलब why did they lose it so early? It's about कि they had got their team set by then. So I think that was the reason why. And I think even during one of the breaks, Gautam Gambhir looked very like calm and उन लोगों का calculated plans हाँ. कि अभी we'll go for only these 3 picks are there for us, we'll go for them. जब उन लोगों का मतलब लास्ट 3 ही players थे and they went for 3 players and got them. So nicely planned. And so Kiran Kumar has made one observation here. Uh, the comment is Dhawan is sold for less price than Shah Rukh Khan. Rest in peace expertise. So इसके ऊपर इसके ऊपर I think the comments है I think updated हो गया.
हाँ, अपडेट हो गए कमेंट, सो आई कैन जस्ट चेक हियर. ओके. या बट आई थिंक इसके ऊपर हम डिबेट करने जाए तो इट विल गो ऑन एंडलेस, राइट? लाइक राइट, अभी कुछ देर पहले मैंने डेविड वार्नर के बारे में बात किया था, कितने सारे प्लेयर्स है, दे वेंट फॉर 8 करोड़, 10, आई मीन कल हमने कितना अभी हेटमायर के बारे में बात किया था, यू नो सो सो आई थिंक दैट दैट debate is something that hum, nothing can justify, like we cannot justify some player getting a certain amount because finally it's about अभी अभी डेविड वार्नर के ऊपर और किसी ने बिडिंग किया रहता था, ऑब्वियसली द टीम दैट वांटेड हिम वुड हैव वेंट फॉर अ हायर अमाउंट, राइट? राइट, But once you have that person, have get that player at a certain amount, obviously you are going to pick him. राइट, See. And it also means that he was not in the scheme of actions. He was not in the scheme of plans for other teams. राइट। और You know. ये मतलब इतना रियल टाइम डिमांड सप्लाई का चेंजेस होता रहता है यहाँ पे ऑक्शन में। तो जब Hmm. प्लेयर इस टाइमिंग में आ रहा है फॉर द बिडिंग, वो भी Hmm. काफ़ी मैटर कर जाता है। एंड उस टाइम बाकी टीम्स के कैसे कंडीशन है, तो उसके ऊपर वो प्राइस वैल्यूएशन बहुत चाहिए। तो हमेशा वो प्लेयर, एक इंडिविजुअल प्लेयर का क्रिकेटिंग क्वालिटी कितना है उसके ऊपर इट्स नॉट सोली Right. डिपेंडेंट। तो काफ़ी वो इकोनॉमिक्स का सप्लाई डिमांड के जैसा है कि क्या क्या हाँ. सिचुएशन है उस मोमेंट में। तो और या लाइक यू सेड द स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज इफ यू अगर आप डेविड वार्नर जैसे प्लेयर को लोगे, देन यू हैव टू प्ले हिम एज अ ओपनर. राइट, यू कैनॉट सेंड हिम 2 डाउन 3 डाउन, वो उनकी पोजीशन ही नहीं है. सो अगर अगर एवरी टीम, आई एम वेरी श्योर, केम अप विथ देयर प्लान सेट ऑफ ओपनर्स की दीज आर द ओपनर्स दैट वी आर गोइंग फॉर. राइट। Why players like Steve Smith and Labushin are unsold? आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू बी अनसोल्ड बिकॉज़ Yeah. अ, एक तो है, आई थिंक दे आर नॉट रियली लाइक गुड एक्सेलरेटर्स इन टी 20 क्रिकेट। और Hmm. स्टीव स्मिथ हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग लास्ट सीज़न। So with I think Rajasthan Royals he was in Delhi Capitals, sorry, yeah, in with Delhi Capitals he wasn't that good. तो Yeah. उसी वजह से I think they went unsold. So अब But considering our obsession with Australian cricketers, I won't be surprised if, probably 1 or 2 years or few years down the line, Steve Smith joins Delhi or any other squad in the management. possibly, yeah, but Yeah. स्टीव स्मिथ तो अभी लाइक खेलेंगे काफी साल, मतलब एज अ हाँ, अभी तो काफी साल खेलेंगे वो, ऑब्वियसली, बट या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लास्ट ईयर तो जस्ट फॉर हिज एक्सपीरियंस दे टुक हिम. आई डोंट नो, दे ही वेंट इन फॉर 2 crores. राइट। आई And थिंक I even remember, I think I don't remember which Australian cricketer it was. I think some legendary cricketer. Yeah, that tweet had become quite viral. Like he said, "Ki I don't think Steve Smith will go to India to will stay away from his family for so long just to earn 2 crores." And but still he came या and it, and played, but obviously when it was not a good outing for him that season. So yeah, and Abhishek Sharma for 6 crores. What is your call? I think again it's a case of they wanted, I mean, उनका बंदा है तो let's have him back in our squad, वो वाला sentiment भी था, हाँ, along with his skill set, राइट। और इंडियन right? प्लेयर है तो उसकी वजह से भी थोड़ा इन्फ्लेशन हुआ प्राइस। Yeah, when they get Warner for the same money. दिल्ली का स्क्वाड भी एक्चुअली काफी अच्छा है, तो आई थिंक वी विल टॉक Yeah, अबाउट yeah, I think we did not talk about the Delhi squad, right? दिल्ली। Okay. Just okay. Here we are. Delhi squad. पृथ्वी शॉ So मतलब Yashtul was a good pick. गुड पिक, या फ्रॉम द That too, just for 50 lakhs. I actually thought that considering मतलब अभी जितना hype हुआ था अपना ये वर्ल्ड कप का, तो आई थॉट दैट he'll be attract he'll attract more money definitely.
right. So for 50 lakh तो it's a steal हाँ, at this point. एंड डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ का ओपनिंग पेयरिंग भी काफी एक्साइटिंग है, मतलब Yeah, फॉरवर्ड टू, तो yeah. ये भी आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स है, मतलब आफ्टर लखनऊ या एट पार विद लखनऊ। Hmm. And then of course there's उनका मिडल ऑर्डर भी अच्छा अच्छा विकेट अच्छा ही दिख रहा कीपर है. भी, भरत इज इन गुड फॉर्म. I राइट। mean is in good and ऋषभ पंत ऋषभ पंत है, अक्षर तो पटेल है इन लोगों कैप्टन है. का। बॉलिंग हाँ में दे अक्षर पटेल कैन ऑल्सो प्ले हाँ, बॉलिंग शॉट्स. में दे हैव अ वेरी लाइक प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर, चेतन सकरिया है, या शार्दुल ठाकुर है आपका, फिर एंगिडी है. एनडीडी है, फिर मुस्तफिजुर रहमान टी20 के लिए या एंड बोथ आई थिंक दिस मुस्तफिजुर रहमान एंड एंगिडी they went in for the they went during the second round, so they were Mustafizur able to. was picked first round only yesterday, but Oh, okay. maybe Mustafizur first in first round. I think हाँ, NGD was picked today. हाँ। और मिचेल मार्श एक्चुअली काफी अच्छा उनका वर्ल्ड कप गया एक्चुअली ये बहुत काफी अच्छा बॉलिंग अटैक है यार. मतलब हाँ, इवन नागरकोटी इज अ गुड बॉलर. सो ही इज डिसेंट, हाँ, आई या थिंक, नो इट्स लाइक अगर समझो कल को इफ नॉट चीज एंगिडी इज नॉट अवेलेबल और चित सकारी आई मीन एनी ही कैन टेक ऑन. राइट, राइट, कुलदीप यादव को लेके अच्छा किया. आई वाज जस्ट होपिंग कि कोई तो टीम ले ले उनको. आई मीन हाँ, कल ही होप कर रहा था. इट्स गुड टू सी हिम गेटिंग अ चांस. So, in fact, I read somewhere, I don't know which KKR owner because there were 4 5 people sitting there. So, uh, he was asked about Kuldeep Yadav's selection, and he said that his skills were not utilized well हम्म, so far throughout the IPL in the all in the previous seasons. और हम उसको अच्छी तरह से ये करेंगे करके तो hopefully probably that also means that he'll get fair chances uh, राइट, for playing हम्म। this IPL. Okay. केकेआर में कुलदीप यादव का है, आई थिंक ही लॉस्ट अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर वो मोइन अली वाला इंसिडेंट, जब उन्होंने अरे हाँ वो 4 5 छक्के खाए, उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होते गया। फिर एंड ऑल्सो उसी टाइम ऐसे आपके वरुण जैसे स्पिनर्स उभर के भी आए केकेआर स्क्वाड में, एंड दे ऑलरेडी केकेआर ट्रेडिशनली हैव ऑलवेज हैव अ गुड सेट ऑफ स्पिनर्स, तो इनका बेंच में हो गया, तो लास्ट सीजन जैसे उनको एकदम चांस ही नहीं मिला कुलदीप यादव and okay let's just take this question because obviously उसको मिस्टेक से तो नहीं लिया है खलील अहमद को. को। बट डू यू थिंक कि मतलब आई डोंट नो गोइंग इज बाय करंट फॉर्म. आई डोंट नो व्हाट इज करंट फॉर्म इज ऑनेस्टली. हाँ, हाँ, So like even my when my dad was watching the auction and he was like क्या चल क्या रहा है केकेआर अभी मतलब have they got to the sorry दिल्ली ने लिया ना इनको. हाँ, हाँ, आर यू गेट दे हैव गॉट टू द पॉइंट कि इतने सारे बॉलर्स है कि चलो इनको भी ऐड कर ही देते हैं स्क्वाड में. आ जाओ तुम भी आ जाओ खेल लो. हाँ, मतलब सो खलील, मेनी फास्ट बॉलर्स. हाँ, वो शायद फर्स्ट सीजन जब ब्रेक थ्रू सीजन था उनका, सनराइजर्स हैदराबाद में काफ़ी अच्छे खेले थे, एंड देन ही गॉट चांस आई थिंक इन द इंडियन टीम एज वेल, एशिया कप में ही वाज देयर, पर हाँ कभी एक्चुअली उतना प्रॉमिसिंग नहीं कर पाया यार। और इनके ऊपर या काफ़ी फोकस था बिकॉज इंडिया आफ्टर वो जहीर खान वाला बैच के बाद इंडिया हैज़ बीन सर्चिंग फॉर अ लेफ्ट आर्म गुड फास्ट बॉलर, तो इस इनके ऊपर भी बेट लिया था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अभी तो लगता है ही समवॉट ऑन अ डिक्लाइन, बट देखते हैं अब कैसा परफॉर्म करते या ओके लेट्स मी जस्ट ओके जस्ट अ रिक्वेस्ट यहाँ पे to everyone. See, when you use super chat, first of all, thank you for using the super chat feature, Mahesh. But I think it would really help अगर हम जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी के ऊपर आप क्वेश्चंस पूछे बिकॉज इट्स रियली अनफेयर यहाँ पे बिकॉज देन दैट दिस विल बिकम अ ट्रेंड. ये एक स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम बन जाएगा कि सब अपने अपना चैनल क्या वीडियोस आई मीन ठीक है. अगर आपको किसी को अपना वर्क प्रमोट करना है देन ही और शी कैन पिक मी ऑन इंस्टाग्राम और इवन ऑन यूट्यूब. मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू सपोर्ट यू एज इन वॉट एवर वे आई कैन. बट ऐसे सुपर चैट का ये मत करो क्योंकि आपकी मतलब आपकी मेहनत की कमाई है ये इवन इफ इट्स ओनली 40 रुपीज़ जो भी है. एंड बट बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट सुपर चैट आई ओनली फॉर यू आई एम गोइंग टू
read this out that you have made a video for RCB in dance Adappa channel Dose. I mean, what I don't know what that means, but ठीक है, thank you for the super chat, but try not to promote something that we are not talking about here in the stream. Okay, thank you. So let me see if there's question here regarding the. Oh, yeah, I think we did not talk about the Gujarat squad, right? नो नॉट येट, हमने विकेट Yeah. कीपर के बारे में थोड़ा सा बात किया तब। हाँ. So yeah, Mr. Teet Popat has asked about the Gujarat squad view. I think it's a fair. तो हाँ, हमने जब विकेट कीपर के बारे में बात किया था तभी ये किया था that they have got a fairly balanced side हाँ and हाँ, but थोड़ा I think uh, when they went in for Vridhaman Saha and Matthew Wade, it was more like a desperate move. I'm not sure whether it was a desperate move कि अरे चलो दो विकेट कीपर को दो मूव्स में ले हाँ लेते हैं ऐसे. But otherwise, let me just take share their team squad here on the screen so that it will be easy for us to talk about it. Okay, यहाँ पे अच्छा okay मैंने ये शेयरिंग स्टॉप किया था. जस्ट गिव मी 2 seconds. या Okay. Yeah, so they got Shubman Gill. This Gujarat, right? Gujarat Titans, yeah. Jason Roy, like I said yesterday, I think for 2 crores, it was a very, very good deal. हाँ Yeah, he can make a difference there at the top. So, Jason Roy and Shubman Gill are the ones that will open for them. राइट। And Shubman Gill, I think आपने भी कल बोला था कि T20 कैसा. के लिए may not be हाँ, right. So it's, he's like on off thing का केस है. Like when a team is chasing a 120, 130 or a 140 like score, then तभी उनका innings काम आ सकता है ऐसे, right। you know. But when they are opening the innings, then he has to able to accelerate at the right time. And they have got 2 wicket keepers in Saha and Wade. I think Saha is the opening option as well. हाँ हाँ, right, correct. Yeah, I think Hyderabad made use of his skills when nobody expected him to open. Suddenly, he come opens and he played that great innings, right? नहीं वो तो एक तो पंजाब के Excuse खेला me. था 2014 फाइनल में, he scored a हाँ हाँ 100 हाँ. in the final for Yeah, yeah. And this was very recent, I guess, the one I'm speaking about. Yeah. And all-rounders में okay, they have drafted हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑलराउंडर में ड्राफ्ट किया. सो मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो बॉलिंग करने वाले हैं. तो so the mystery of Hardik Pandya, and so they are good. राहुल तेवाटिया, गुरप्रीत जयंत सिंह मानिया. यादव, काइंड ऑफ हाँ, सिमिलर प्लेयर्स है, फिर विजय ऑन ऑफ सब ऐसे मतलब ब्लो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड प्लेयर्स लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे इन द ऑलराउंडर सेगमेंट. ओके, बट देन दे हैव राशिद खान इन दर बॉलिंग ऑप्शंस. वरुण आयरन का थोड़ा सा काफी एक्सपेंसिव जाता है, ये एक टाइम में हाँ, तो प्रॉमिसिंग आई था। थिंक ही इज मोर ऑफ अ बैकअप हियर, हाँ वरुण अरुण. एंड प्रदीप, आई एम सरप्राइज प्रदीप सांगवान अभी भी मतलब ये मेरे को तो लग रहा है ये हाँ फर्स्ट सीजन से रेलेवेंट है, मतलब ही वाज इन एंड अराउंड, ये और धवल कुलकर्णी ये लोग काफी पुराने हैं, मतलब अभी भी हाँ हाँ हाँ. सेटअप So, में। but they got good pace attack in Ferguson, Shami, and I mean, not pace attack. Overall attack, they have their 3 frontline bowlers are Ferguson, Shami, and Rashid Khan, definitely. And I think Joseph was a good buy at 2.4 crores. हाँ अल्जारी जोसेफ, हाँ ही वाज अ गुड बैटर। He is a good buy at 2.4 crores. So, yeah, this is looking decent squad. Uh, if they can start off well, uh, batting में, so I think they can defend the score well considering the bowling attack they have. राइट। Yeah. So, so a lot of people यहाँ पे again still very upset that Raina was not picked. But I think we already हमने शुरुआत में बात किया उसके बारे में कि what was the reason behind that. Okay. No, uh, I don't think that will happen unless for some reason Pant is not able to play a game. But I think if Pant does not play any game due to any reason, I think Shreyas Iyer would not Shreyas Iyer. Sorry, who would be their second choice? I mean, David Warner डेविड or वार्नर, David Warner is going to be a vice captain, I guess then, right? हाँ आई थिंक और कोई तो दिल्ली टीम में ऐसे लीडरशिप मटेरियल
मतलब स्पेशली इंडियन कंटिजेंट से तो कोई है नहीं। और दिल्ली. Yeah, yeah, he's I mean batting में तो वही है, and he is the potential captain. राइट। Okay. कुछ लोग पूछ रहे हैं, व्हाई श्रीशांत वाज नॉट कॉल्ड एट द ऑक्शन, बिकॉज आई थिंक लास्ट Yeah. एक्सेलरेटेड राउंड्स किए ना, तो ओनली Hmm. दोस प्लेयर्स जिनके With नाम the teams. टीम सिलेक्टेड, तो उन लोगों का हाँ. ही नाम ऊपर आया, तो श्रीशांत का It नहीं। was. I think it was logical. It was impossible to have 600 players हाँ, uh, during the auction. यहाँ पे. So, and I'm not surprised that uh, like no team preferred to right. risk investing him in. That's all I can say. So I think उसमें disappointment की कोई बात नहीं है, because finally अगर player पे कोई अगर investment कर रहा है वो भी 3 साल के लिए, and it has to be worth it ना, Right. and he has been out of cricket for so long now. Uh, Yeah, I think it's a very good question here asked by Saransh. Because मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था आज कि लॉट ऑफ IPL owners now are against this open bidding thing that's happening, and many actually prefer to have a drafting option simply, Right. rather than going for this, because ये मैंने we have seen this with many players, right? Like for example अभी हाल we'll talk about the very recent players, so that our people watching here can connect. Let's say Venkatesh Iyer. Now Venkatesh Iyer अब ठीक है, अभी KKR में खेल रहा है, but out of nowhere, out of the blue, he came into the international scene in IPL, in the Dubai leg of the IPL, and कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो he'll become an integral part of KKR setup, and probably it was his innings, that 2 or 3 innings that he played, जिसकी वजह से केकेआर के चांसेस बढ़ गए टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड, एंड देन इवन इन द नॉकआउट मैचेस ही प्लेड वन गुड इनिंग्स, आई रिमेंबर. एंड इमेजिन लाइक यू हैव समवन, अ प्लेयर लाइक हिम हु इज रॉ, जिनको आप नर्चर करते हो अच्छे से, एंड ही बिल्ड्स अप हिज स्किल सेट थ्रू मेंटरशिप from that particular squad, that particular franchise, and हाँ, then suddenly when his confidence is at full peak, he goes on to some other team in right. this open bidding auction. So yeah, that is a thing that definitely bothers the IPL, some IPL owners at least that I have read, and they want to go for the drafting option rather, from the future, in future. What is your take on it? या आई एग्री, एंड जो एक फैंस का भी एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है विद सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, एंड अगर आप एवरी 3 साल वो चेंज पूरा हैपजर्ड चेंज होता रहेगा, तो वो मतलब जो एक कनेक्शन बिल्ड होता है टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स टीम एंड फैंस, वो थोड़ा डिसकंटिन्यू हो जाता है। प्लस वही है कि हर फ्रेंचाइज दीज फ्रेंचाइजीज आर आल्सो वर्किंग ऑन देयर एकेडमिक्स, तो अगर ये हो कि आप एकेडमी से किसी को नर्चर करें और वो हो सकता है कि 3 साल बाद वो चले दूसरा टीम में चला जाए, तो फ्रेंचाइजी के लिए भी वो मोटिवेशन कम हो जाता है कि वो कोई नया प्लेयर डेवलप करे, मतलब जो एकदम ग्रास रूट है, दे विल ऑल्सो लुक वेट टू पोच प्लेयर्स फ्रॉम द ऑक्शन। तो Yeah. बीसीसीआई को भी फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट मे बी ये ऑक्शन से, मतलब ऑक्शन वाला मॉडल से हटना पड़ेगा इन द फ्यूचर, बट जस्ट बिकॉज टू टीम्स वर कमिंग इन तो ये करना पड़ा, पर आई डोंट थिंक इट विल कंटिन्यू। हाँ, obviously because two new teams came into the picture, उसके लिए that was the major reason why this happened. Yeah, क्योंकि otherwise obviously as in for people like you and me, हम टीवी पे देखते हैं उसको, and हम ट्वीट करते हैं या वीडियोस बनाते हैं, हमको फ्रॉम द अदर साइड इट लुक्स गुड, इट लुक्स ऑल फैंसी कि अरे क्या, अरे वो 8 करोड़ में गया है, वो 10 करोड़ में गया, इस वो अनसोल्ड हो गया, एंड वो डिजर्व नहीं करता, एंड ऑल दैट स्टफ. But only we know what the franchise owners and the players go through राइट। when they, when we see that players being sold like commodities. I know it's a very uh, big word that I'm using, being sold like commodities, but that's what they said. This is what exactly what the the IPL owners said. एंड एक्चुअली जब फर्स्ट ऑक्शन हुआ था, जब फर्स्ट टाइम आईपीएल ऑक्शन हुआ था, आई थिंक एडम गिलक्रिस्ट एक उन्होंने एक कमेंट किया था कि ही फेल्ट लाइक,
तो ऑस्ट्रेलिया में शायद काउस का ऑक्शन होता है फार्म्स में, तो हाँ. he said that he felt like a cow जब उन लोगों को ऐसे कमर्शियल ऑप्शन हुआ था, तो ये एक कोट उस टाइम आया था 2008 में जब फर्स्ट कोट हुआ था। Yeah. We'll take 2 or 3 questions more and then we'll wrap it up. या Okay. Let me just check this question here. इसके ऊपर शायद हम लोग लास्ट हाँ हाँ हाँ, हमने बात किया था उसके ऊपर, कल कल बात किया था हमने, और बिकॉज आई गेस बिंदु वाज नॉट देयर yesterday, आई डोंट नो, बट या बिकॉज चाल वाज डेफिनेटली नॉट देयर in their plan, RCB, as simple as that. He was not there in their plan and that's why they did not go for him. एंड जब चाहल का नाम आया, उसके वो टाइम तक आरसीबी हैड ऑलरेडी स्पेंट 18 crores ऑन 2 players. तो गोइंग फॉर चाहल वाज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रिकी. उनका और पैसा चला जाता एंड उनका जो खाते में पैसे बचता, that would have been less than 10 crore, and a lot of players were remaining at that point. So I think it was a strategic call as well, to not go for Chahal, and also because he was never in the scheme of things. But then, on a brighter note, it will be good to see Ashwin and Chahal playing in the same team, right? Okay, let me check this question. What is this? Do you think that having more teams inflated prices to a different level while some good players went for way less? Yeah, ये तो हर auction में होता है ये, you know. This happens in every auction where some deserving players they go for much lesser amount, and so what do you think about CSK squad? I feel Conway was a great steal and will bring composure to the batting lineup. CSK will also have between, yeah, as rightly said, they have a lot of options there, and quite balanced looking squad. And I think CSK, I mean, उनका पूरा यही ऐसा है कि everything they planned it out, sort it out properly. They know what they want, which players they are going to take during the auction. I think they more or less got what they wanted. Okay, except for that Raina thing, which many fans are upset about. एक एक काफी अभी सोशल मीडिया में एक ट्रोल हो रहा है रिगार्डिंग केकेआर गोइंग फॉर रिंकू सिंह अगेन। तो रिंकू सिंह एक हाँ. जो काफी दिनों तक केकेआर के स्क्वाड में रहे हैं, एक दो चांसेस मिले, उतना कुछ खास नहीं कर पाए, मोस्टली सब्स्टिट्यूट फील्डर के हिसाब से मोस्टली खेलते हैं, तो दे अगेन वेंट हाँ. फॉर हिम, तो जिसकी वजह से काफी ट्रोल हुआ। पर ये बहुत जनों को नहीं पता एक्चुअली रिंकू सिंह का फर्स्ट क्लास नंबर्स आर वेरी गुड। तो उनका Yeah. एवरेज इज Okay. अबाउट 60 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए में उनका एवरेज 50 के ऊपर है, एंड इवन लाइक डोमेस्टिक टी20 में उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट नियर 140s या लेट 130s में है। तो उनके नंबर्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं, इज अ वेरी गुड फील्डर एज वेल। तो मे बी इसके वजह से द टीम स्पेशली केकेआर आर स्टिल गोइंग फॉर हिम, ऑल्दो उनका क्योंकि आईपीएल में उतना खास अभी तक कुछ कर नहीं पाए, तो लोग काफ़ी ट्रोल। Yeah, that's the thing यहाँ पे, because मैंने भी ये नोटिस किया है, good that you brought that up, कि जब भी कोई when player is picked retained, people, the fans tend to check his IPL record कि इन्होंने IPL में कितना ये किया है। और ये चीज़ आज टीम डेविड के साथ भी सेम हुआ। जब टीम डेविड को मुंबई ने पिक किया, he was being trolled on Twitter कि he played just one innings, I think for RCB, I don't know for which team, he scored 1 run. ओके, इस फेस 3 बॉल एंड स्कोर 1 रन। और तो सब लोग वो शेयर कर रहे कि क्या कर रहा है मुंबई इंडियंस, क्यों इस पे इतने पैसे डाले एंड ये दो, बट दे डोंट नो व्हाट द इम्पैक्ट ही हैड इन ऑस्ट्रेलियन बीबीएल, एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट ही हैड इन पीएसएल, बिकॉज पीएसएल में भी काफ़ी अच्छे बॉलर्स रहते, एज इन फेसिंग दोज बॉलर्स एंड स्कोरिंग दोज मैनी रन्स, it's not a child's play. So I think it was definitely a very good buy, Team David. Absolutely. So, anything you want to add, Devjit, before we call it a day? Yeah, Or I think night we rather. covered most of the teams, and interesting जो picks थे और जो howlers थे ऑप्शन के, हमने सारे I think we have covered। तो Yeah, really interesting option। I must say I was definitely disappointed that Srishant's name did not come up.
बट मुझे ये भी लगा था कि विद द टर्न ऑफ इवेंट्स कि शायद उनका नाम आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं because है। it was impossible to cover those many players in such less time. हम्म। and and last May it was actually really funny to see when Arjun Tendulkar's name came up. So it was obvious that MI is going to go for him. Okay, and I have no problem with that. ठीक है यार, मतलब उनको उसको नर्चर करना है, ये करना है, सचिन तेंदुलकर का बेटा है, दैट उनका टीम है, उनका पैसा है, उनको जो करना है उनके पास, इट्स अप टू देम. नो, what I identified funny was when they bid for him, Gujarat also bid for him. हाँ हाँ You saw that? हाँ। Just for fun से कि नहीं जस्ट चलो, हम तो नहीं लेने वाले इसको, लेकिन अगर हम नहीं लेंगे, हम मुंबई इंडियंस के 10 लाख ऐसे ही ये कर देते, जस्ट बर्न देयर मनी ऐसे. एंड हाँ वाइल दे वर डूइंग इट, दिस गुजरात टाइटन ओनर्स एंड मुंबई इंडियंस जो भी वहां पे बैठे, दे आर लुकिंग एट ईच अदर एंड स्माइलिंग लाइक क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा थिंक लाइक, मतलब 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है. Like just हाँ like that, he went from 20 lakhs to 30 lakhs. हाँ No, good for Arjun Tendulkar. I have nothing against him, but the हाँ। way this money, पैसे को ऐसे मैल की तरफ फेंक देते हैं ना, just like that. ये एक्चुअली मैंने एक सिमिलर ऐसे मेरे को याद है हुआ था, लाइक ये काफी साल पहले का बात है। मोहम्मद कैफ के जब लाइक फ्रैग एंड चल रहा था करियर के, तो वन ऑफ द ऑप्शंस ही वाजंट पिक्ड एट ऑल। देन हाँ री ऑक्शन हुआ, उसमें भी नाम नहीं आया। फिर सडनली शायद सहारा ग्रुप था या कोई एक ग्रुप था, दे थॉट दैट नहीं कैफ को लेते हैं। तो जस्ट एट द एंड ऑक्शनियर बोला कि ठीक है, एक और फाइनल रिक्वेस्ट आया तो विल ब्रिंग अप कैफ ताकि ये टीम खरीद पाए। तो उस टाइम हाँ विजय माल्या बैठे थे आरसीबी कैंप में, तो जस्ट फॉर हाँ फन क्योंकि उन लोग के पास बजट था, तो हाँ. उन्होंने भी उठा दिया वो। तो फिर बोला अरे ये तो हमने बस लास्ट में रिक्वेस्ट किया था इनको लाने के लिए, तो प्राइस उन्होंने ऐसे करके 2-3 बढ़ा दिए। तो अल्टीमेटली वो थोड़े ज्यादा पैसे में गए। पर वही है कि मतलब इतने सारे पैसे जो शायद कॉमनर्स कॉमनर्स के लिए कितने ज्यादा है वो, और इन लोग ऐसे ही Yeah, man. फन में वो ऐसे। फन में एग्जैक्टली, लाइक टीवी पे देखने को अच्छा लगता है ये सब चीजें. हाँ बट देन समटाइम्स जो मेन ऑप्शंस होता है, वी हैव सीन दिस हैपन मेनी टाइम्स, दैट इट इज एक्चुअली यूज एज अ स्ट्रेटेजी. लाइक व्हेन अ पर्टिकुलर फ्रेंचाइज नो दैट XYZ फ्रेंचाइज एक प्लेयर को खरीदने वाला है, जानबूझ के उसके ऊपर बिडिंग करते जाते हैं, सो दैट दे बर्न देयर मनी. एंड दैट इफ यू रिमेंबर, ये दिल्ली के जो दैट वन गाय हैज बिकम अ सेंसेशन. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, जो अभी मैं आज का करंट ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ. द वन गाय हु सिट्स इन द मैनेजमेंट उनके टीम में. सो लाइक ही इज रनिंग द शो देयर, गेटिंग प्लेयर्स ऑल. सो एक आई जैसे थिंक, या एक जैसे यही मतलब लाइक हाउ मच मनी स्पेंड ऑन क्रिकेट, इसके ऊपर एक लाइक ट्रिविया था। मैं आई हैड रिटन अबाउट इट ऑन माय पेज एज वेल, फॉरगॉटन क्रिकेट मेमोरीज। तो लॉन्ग टाइम बैक लाइक इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, प्रेमचंद जो फेमस हिंदी के राइटर थे, ही वाज आल्सो क्रिकेट क्रिटिक एज वेल फॉर वेरियस ओके. न्यूज़पेपर्स बैक इन द डेज। तो उस टाइम हाँ हाँ. इंडिया में ना एमसीसी के प्राइवेट टूर्स आते थे, विच वर समवट लाइक आईपीएल, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के मिक्स टीम्स फॉर्म करके दे यूज्ड टू प्ले इन दोस प्रिंसली स्टेट्स, एंड राजा महाराजास फंड करते थे टू प्ले। तो उस टाइम कंट्री में इतने प्रिवेलिंग इश्यूज थे, बट द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास एंड द रॉयल्स, दे वर प्रिपेयर्ड टू शेल like astronomical amounts on cricket to like organize this MCC tours। तो प्रेमचंद ने काफी क्रिटिकल वे में इसका ओह. टिप्पणी किया था इन वेरियस न्यूज़पेपर्स। तो इतने सालों बाद भी ये सिचुएशन आईपीएल में भी देखा जाता है कि ऑल्दो मे बी कंट्री में बहुत सारे इश्यूज है, पर व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट the we are prepared to shell out a lot of money, but understandably so because cricket is a passion and a religion in the country। तो ये इतने सालों बाद भी ये sort of एनालॉजी आप ड्रॉ कर सकते हैं दोनों एरा के टाइम। Yeah, that's nice insight there. So, guys, I think we'll wrap it off here, and I hope you all had a good time. Yesterday जो जितने भी लोग कल आए और आज भी उन्होंने लॉगिन किया, thanks for coming in, and I would request all of you to follow Devjit on Instagram. If you're not yet following him, do follow him right now, and also subscribe to his YouTube channel. I think now that he has a YouTube channel, he also will come up with more and more videos, and he'll have his own stream where hopefully he will call me as a guest. And Sure। so
it was good. Devjit, I hope you had a good time, Yeah, yeah, and I had an hopefully we can amazing do time. more of this. In coming days, Right. and I'm with each of the session. मैं भी hope कर रहा हूँ कि मैं learn करूँ चीज़ें using this streaming platform to connect with my audience, और Right. मैं भी ये hope करूँगा कि I come more prepared, in subsequent sessions. I Yeah, think I had like an amazing time here and मेरे लिए भी एक लर्निंग कर्व था to come in a live stream and do analysis on cricket. तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा and I hope to come here again on your channel. Thank you for having me and अरे it's my pleasure always, and thank you everyone, and फर्स्ट एंड आई एम रियली सॉरी इफ अगर मैं आप लोगों के कुछ और सभी सवाल ले नहीं पाया हूँ. इफ आई हैव नॉट टेकन योर क्वेश्चन, इसका मतलब मोस्टली तो यही है कि दैट क्वेश्चन वाज ऑलरेडी एड्रेस्ड, या उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, या इट वाज मोर ऑफ लाइक अ जेनरिक क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई सी दैट विच इज़ योर फेवरेट स्क्वाड. ऐसे अभी देवजीत इज़ अ KKR फैन, यू ऑल नो दैट. एंड ओके, आई थिंक मेरा बैटरी भी लो हो रहा है यहाँ पे. अच्छा And अच्छा. so my favorite squad, like I said, right now is I have a lot of hopes on Mumbai and Lucknow Super Kings. Lucknow got a very good squad considering this is their first time, right? So I will wrap it up. My battery is very very low. Okay, sure, It sure. can shut down anytime now. Bye Devjit. Bye everyone. Bye everyone. Bye Okay. sir. Have a good week ahead. Okay. Bye. Good night.